everyone, and a very good evening. I hope that each one of you is in the best of your health and well being. So, yesterday, one of my friends called me up sharing that she has been called for an interview, an organization, a company that she really wanted to work with. And I was so excited listening to this that I almost congratulated her, but sensing that her tone and the opportunity did not match, I said, okay, but what happened to you? So she told me that, you know what, I am quite scared about what is going to happen tomorrow. I asked her, have you not prepared for the interview? Because this is something that you have really been looking forward to. She told me that, yeah, I have prepared. I have prepared all the questions. I have looked at all that I've done in the organization. But still, I'm scared about what questions I'm going to be asked in the interview. And if it does not go the way, I have planned to, then what will happen? I don't know. I could sense where she was coming from. And I could understand why was she feeling that way. In fact, most of us इंटरव्यू के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट इंटरव्यू से एक दिन पहले यूजुअली वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दोज बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? एंड द रीज़न वाई वी एक्सपीरियंस दोज बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक और slight anxiety or slight stress, tension, worry is because हम जय गूगल बाबा जी की से सारे क्वेश्चंस तो निकाल लेते हैं, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकाल लेते हैं, बट फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि क्या यही क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा, या अगर उन्होंने कुछ और पूछ लिया मुझसे तो फिर मैं क्या करूँगा. So, all these doubts start to creep in, and that is what makes us less confident and makes us feel less prepared for the interview. So, before we go ahead, I have a question to you. Could you tell me कि इंटरव्यू को बोलते हैं, इसको एक फेस टू फेस एग्जामिनेशन बोल सकते थे, एक फेस टू फेस वाइवा भी बोल सकते थे, बट वाई इंटरव्यू? So interview का मतलब है, it is made up of two words, inter and view, which means देखना, view of internal world. Now the सवाल or the question is, interview किसका या internal view किसका? Pretty obvious, जो व्यक्ति, जो candidate उस particular interview position के लिए appear हो रहा है, उसका internal view देखने के इस पूरे प्रोसेस को इंटरव्यू कहा जाता है. दैट इज़ वाई पीपल हैव राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, समटाइम्स इवन 6 or 7 राउंड्स, एंड देन ओनली they get selected for that particular organization and that particular role. Now, there are two ways of how an interviewer can look at the internal view of a candidate. One is through the resume that we carry with ourselves, we share beforehand, or we present to the interviewer. And the second one is through the introduction. In the resume, there is almost everything written, right? We write everything, whatever experience we have had, if we are a fresher, what all things we've done, what all degrees, what all study we've done, and if we are an experienced candidate, हमने किन किन projects पे काम किया है, हमारी highlights क्या है, achievements क्या हैं. तो सवाल ये है कि अगर इंटरव्यूअर के पास मेरा रिज्यूमे है, उसके अंदर तो मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, वाई डज द इंटरव्यूअर नीड टू आस्क मी द क्वेश्चन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हिच वी ऑल नो इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू. द रीज़न टू इट इज़ बिकॉज रिज्यूमे पर लिखने में और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने में देयर इज़ अ डिफरेंस. लाइक जब आप कोई कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें कार देखकर कुछ पसंद आ रही होती है, बुकलेट में हम उसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं, बट जब सेल्समैन आके हमें कुछ एक्सप्लेन करता है तो हमें इन डेप्थ समझ आता है उस प्रोडक्ट के बारे में या उस व्हीकल के बारे में, एंड देन वी डिसाइड, वी आर एबल टू मेक अ माइंड इफ दैट
fits our needs or suits our category. Hence, introduction plays a very, very important role. It is one of the crucial steps which will decide आपका 70% ऑफ द इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले सवाल कहाँ से आएंगे. Exactly correct. It is going to be from how you introduce yourself. So, are we ready to understand what are the aspects of the introduction? तो आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे फॉर एन इंटरव्यू ऑफ अ जॉब फॉर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट. तो पहली चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होती है? ऑब्वियसली लोग अपना नाम बताते हैं. सो पीपल से माई नेम इज सो सो या फिर आई एम सो एंड सो. दैट इज द फर्स्ट थिंग, ऑब्वियस. व्हाट इफ द इंटरव्यूअर सेज, अच्छा अवंतिका प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. और कभी कभी हम क्या शुरू हो जाते हैं, वेल माई नेम इज अवंतिका. लुक्स फनी राइट. आप किसी को बोलो नाम से और वो अपना नाम लेकर ही शुरू हो जाए अपने बारे में बताना, तो लगेगा ना कि मैं तो आपका नाम ऑलरेडी जानता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की. इट लुक्स लाइक कि हम रिसाइट करके आए हैं पूरा स्क्रिप्ट और हमने उस फर्स्ट लाइन से करना शुरू कर दिया है. इफ़ द पर्सन इज़ नॉट टेकिंग योर नेम एंड जस्ट आस्किंग यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू कैन स्टार्ट विद द नेम. इफ़ दे टेक देयर नेम, if they take your name, obviously नाम resume पे लिखा होगा, and then they ask you to introduce yourself, you can simply move from the second step onwards. तो अब second step क्या होगा? Much obvious. एक experienced candidate के लिए एक जो relevant चीज़ है अब बताना, that is his experience, his or her experience. So now we proceed to telling उस particular field के अंदर हमारा कितना experience है. So we share that I have these many years of experience in so and so field, या I hold these many years of experience in so and so field. Much obvious कि हम उसी field का experience बताएंगे जिस particular field के लिए हम interview दे रहे हैं, because then it is relatable. हमने experience बता दिया. Now we move to the third step, which is to elaborate the experience. क्योंकि एक्सपीरियंस बता तो दिया, बट हमने उस एक्सपीरियंस के अंदर किया क्या है, what have we done is also important to share. So let's say an experienced candidate has worked, or let's say you have experience of 3 organization. आपने 3 कंपनीज के अंदर काम किया है, तो आप अपनी उन कंपनीज के बारे में बताएंगे. बट कैसे बताएंगे? देयर इज़ अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमें फॉलो करना होता है. मतलब सबसे पहले हम उस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जो हमारा रीसेंट एक्सपीरियंस है या जो हमारा करंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मोस्ट रिलेटेबल होगा टू द जॉब दैट वी आर अप्लाइंग फॉर. और फिर उसके पहले वाला एंड देन उसके पहले वाला हम बता सकते हैं. अगर आपने 3 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है, we need to be mindful of the time of introduction, so we will stick to just sharing about 3 organizations and not more. If the interviewer has to ask us, they can ask us the question, but generally talking about 3 organizations ka experience would suffice. So how do we share our experience? In the experience we talk about that, जैसे आपने पहले बोला that I am currently working in so and so organization as so and so. So कंपनी का नाम और आपकी डेजिग्नेशन. उसके बाद में हम बताएंगे where I am responsible for. आपकी areas of responsibilities क्या हैं. For example, I can talk about I am working in ABC Limited as a manager, and my role is of training people, upskilling employees, wherein I am responsible for ensuring they are coming to the organization, orientation to the organization, and till the time they are in the organization, they should keep upskilling themselves in context of the organization need and the customer experience. So this is about the current organization. Similarly, I can share about my previous organization also. Prior to this, I was working with so and so company as so and so, and I was responsible for, in small one, statement. That's it. And then we can talk about the last one, which is, if we have the third one, we can talk about the third one also in the same order. The chronology has to be reversed.
current one to be told first and the previous ones to be shared later. So this is how we share about our experience. Now इसके बाद हम क्या बताएंगे? एक्सपीरियंस तो हमने बता दिया, फिर एक्सपीरियंस तो हमने बता दिया, लेकिन हमारे उस एक्सपीरियंस से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ या फिर हमारे काम की वैल्यू कितनी थी वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड हाउ डू वी शेयर दैट? वी शेयर दैट थ्रू हमें अवार्ड्स क्या मिले, हमारी अचीवमेंट्स क्या रही, या फिर हमने कौन कौन से सर्टिफिकेशंस किए. नाउ व्हाई इज इट नीडेड टू शेयर योर अचीवमेंट्स और अवार्ड? इज बिकॉज क्या हर किसी को अवार्ड्स मिलते हैं? आंसर इज नो. क्या हर किसी की अचीवमेंट्स होती है? शायद हाँ, बट किसी की छोटी, किसी की बड़ी. क्या हर कोई सर्टिफिकेशंस करता है ड्यूरिंग देयर स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन? अगेन द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो. व्हेन वी शेयर अबाउट हमें कौन से अवार्ड्स मिले हैं, हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, हमने कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, इट रिफ्लेक्ट्स कि हमारा जो काम था उसकी वैल्यू और वर्थ इतनी थी दैट इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड. It was a value addition to the organization. Hence, the organization in return rewarded us. They recognized our achievements, and we were interested in our upskilling. So we have certifications also. So we need to mention our awards, achievements, and certification. Now, next what? अब हम क्या बताएंगे? Yeah. So after this, we simply share our educational qualifications. And when we talk about educational qualifications, हमने 10th भी करी होती है, हमने 12th भी करी होती है, हमने ग्रेजुएशन भी करा होता है, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा होता है, शायद PhD भी करा होता है, बट वी ओनली मेंशन दोज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस विच आर द हाईएस्ट and the most relevant to this particular job. So we can mention that I am a graduate in so and so, or I am a postgraduate in so and so. As an experienced candidate, needless to mention 10th 12th कहाँ से करी है, because you are talking majorly on your experience lines. And towards the end, the last thing that we can share is what are we looking forward to in this particular opportunity. So we can share that I aim at contributing towards the organization through my work and being an asset to the organization. So this is one of the statements. If you have another statement which you would want to express, you can share that statement as well. अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हॉबीज़ तो आपने बताई नहीं, फैमिली के बारे में तो बताया नहीं, तो बताना है या नहीं बताना है? जस्ट थिंक अबाउट इट. आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन किसके बारे में है? आपके बारे में? इज इट अबाउट माई फैमिली? नो. इज इट अबाउट माई एनवायरमेंट? नॉट रियली. मोर ओवर, इंट्रोडक्शन के अंदर एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट we'll have a very limited time. So for an experienced candidate, you may have 3 minutes at max to share. जितना हम हाईलाइट कर सकते हैं वो चीज़ें जो जिस पे इंटरव्यूअर का ध्यान जाए ताकि वो उससे हमको सवाल करे, will be the things that we should be sharing in the interview. If you feel like sharing certain hobbies of yours which are relevant to the job or extraordinary, you can definitely go ahead, because it gives a personal angle, like yes, this person has a different personal spark also. As far as family is concerned, there is not really needed to share about the family. However, if you feel that you have that much time that you may want to, you can share, but really does not fit into the structure. And as far as where do you belong or your place, really does not matter. हाँ, अगर वो जॉब उस पर्टिकुलर जगह की है जहाँ से आपका होम टाउन है या आप वहाँ पे रहते हो, you can definitely share about it. And if it is about a relocation, you can mention currently I am staying here but I am open to relocate to so and so place as well. So this is the way we present ourselves, we introduce ourselves, and believe me, if you just master this small technique of 3 minutes, 70% of your interview is in your hands. The game will be in your hand. Whatever questions, whatever things you want the interviewer to ask you,
and you want to share, it'll all be on the right track. So with that, thank you so much for participating in the session, and I'm sure that you're going to rock the interview, being confident about your introduction and presenting yourself in the best possible way. Thank you so much. Namaskar.